इफ यू आर इल, डॉक्टर विल से आप बाहर का चीज मत खाओ, हाँ बाहर का फूड मत खाओ, डोमिनोज पिज्जा मत खाओ। इफ यू गो टू इटली, अगर आपकी तबीयत भी खराब है तब भी आपको पिज्जा देंगे। क्या बात कर रहे हो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई एम नॉट वेल आई एम गोइंग टू इटली What's the difference between these artisanal cheeses and processed cheese, which we have been eating for like ages? There is a lot difference. Processed cheese is not a cheese. तो क्या है वो? इवन मैं भी बचपन से प्रोसेस चीज ही खाते आया हूँ। हाँ जब मैं पढ़ा कि डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस चीज एंड आर्टिसनल चीज में क्या डिफरेंट है एग्जैक्टली, ठीक है ना, तब आई वाज सरप्राइज्ड। What's the exact difference? मोज़रेला बहुत डिफिकल्ट है बनाना क्योंकि अगेन ओके वी हैव टू पुट फिंगर इन द बॉइलिंग हॉट वाटर 100 डिग्री। I mean, you literally have to We put have it to literally put finger in the boiling hot The water. इसलिए जब हम लोग मोज़रेला बनाते हैं या कभी भी कोई भी वीडियो देखोगे ना मोज़रेला का, उसमें कोई लोग ग्लव्स नहीं पहनता। हाँ दिस आई गेट अ लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, आप ग्लव्स क्यों नहीं पहनते जब मोज़रेला बना रहे हो? गरम है ना हाँ पानी हाँ उसमें बैक्टीरिया कहाँ से रहेगा? वो मतलब आई वांटेड टू से थ्रू योर चैनल कि So hi guys, welcome to ROCH podcast to our 10th episode, and today is kind of very special and we have very special guest from a person who has been changing Hyderabad landscape with cheeses through his amazing cafe PS Cheese Café. So welcome Prashant, thank you for joining us on ROCH podcast. I mean, I just wanted to tell, when I tried your burger, I mean, I was just blown away. I still have that flavor in my mouth, like I just still want to have it. So maybe next time when I visit, I'll definitely want to try it again. Sure. So just for the audience, can you just share something about your background, like from where you are and how did you end up starting a cafe? My name is Prashant. I'm founder of PS Cheese Café by Roastery, and it's Roastery by Roastery. So the journey starts from Roastery, and again Roastery started by my elder brother Nishant. Later I joined. I'm the co-founder of Roastery. We are from Bihar. I have done my graduation from here. Okay, I was In which college? Osmania University. Oh, okay. Okay, and In? then BSc BSc. Electronics. Okay. Okay, then I was a part of United Health Group. I worked in a corporate for 2 years almost, more than 2 years. Then Roastery opened, and then I joined. After COVID, PS Cheese opened. I mean, what was the idea behind starting Roastery? So Bhaiya has a specialty in coffee. Like he has done his education from hotel background, and he knows coffee very well. He is very passionate about the coffee. So his first job was in CCD also, and then he came in Delhi. Then he came to Hyderabad. He joined Lavazza, and then in many international companies, coffee companies. Okay, and after a few years, he opened Roastery Coffee House. So which has changed the specialty coffee concept in India. I mean, it has changed the whole landscape of coffee in the space. Yes. So my journey starts with Roastery. After COVID, I started learning about the cheese. I mean, what made you think about going in the cheese side? Cheese side started क्योंकि मैं vegetarian भी हूँ. Okay. And I need good source of protein. And I'm very fascinating about the milk. मतलब बचपन से ही मुझे when I used to see कि milking कैसे हो रहा है, that fascinate me a lot. मतलब you saw how the milk is yeah. coming from the cattle. I used to do that, the milking. Okay. So I was very curious कि milk में ऐसा क्या क्या होता है, ठीक है ना? And I used to see so many products, milk products at home. जैसे दही था, दूध, पनीर, everybody used to make it. मुझे चाहिए था good source of protein, and then I understood कि cheese is the thing which is good for me. Then I started reading about the cheese. So I mean, like when you first started studying about cheese, what was the first thing that really like wow, like that wow moment क्या था? मतलब पहले मुझे ये नहीं समझ में नहीं आता था कि चीज़ में इतने प्रोटीन्स रहते हैं. ओके, एंड चीज़ आर आल्सो वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स. बचपन से तो हम लोग प्रोसेस चीज़ ही देखते आए हैं, ठीक है. जब मैं आर्टिसनल चीज़ के बारे में पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि अच्छा दिस इज़ द एग्जैक्ट चीज़ जहाँ पे प्रोटीन बहुत होता है, विच इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो. जब मैं पढ़ रहा था तो, और जब मैं ट्रैवल भी किया चीज़ के लिए, तो जब व्हेन आई वेंट टू पुलिया इज़ अ प्लेस इन इटली वेयर मोज़रेला वाज बॉर्न. ठीक है ना. तो वहाँ पे जो चीज़ मोज़रेला हर एक घर में बनता है, ठीक है. और वहाँ पे जो पिज़्ज़ा सर्व करते हैं वो लोग बोलते हैं ये रोटी सब्जी मलाई है. रोटी सब्जी मलाई.
ठीक है, Okay. क्योंकि द डो दे मेक इट इज फ्रेश, हाँ. सॉस दे मेक इट एवरी डे, एंड द चीज दे मेक इट एवरी डे. So okay, तो pizza. हमारा हमारा जो यहाँ पे रोटी हाँ. सब्जी मलाई है, वहाँ पे वो पिज़्ज़ा ही खाते हैं. हाँ. Okay. गेटिंग इट. Right. Right. हाँ. Got it. तो और जो चीज़ दो यूज़ करते हैं वो लोग, वो बहुत ही मतलब विच इज़ गुड चीज़, Hmm. ओके, गुड फैट, हाँ. ठीक है ना, गुड प्रोटीन. तो दैट फैसिनेटेड मी कि अच्छा, आर्टिसनल चीज़ इज़ द ओके राइट वे ऑफ गेटिंग गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. Hmm. देन फिर मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा. फिर अगेन द मोज़रेला, द स्ट्रेच ऑफ हाँ. मोज़रेला, ठीक है ना, दैट फैसिनेटेड मी अ लॉट. नहीं, आपके तो फोटोज है पूरे स्ट्रेच के साथ ऐसे ऐसे. हाँ हाँ हाँ, which is one of the difficult cheese Hmm. to make it also, I mean, why is it difficult? because we have to put finger in the boiling hot water 100 degree. Okay. So every cheese, if you make okay, fresh cheese or aged cheese also, at the end cooking is the process. Hmm. Okay, with the mozzarella cooking we do with the hot water. अभी बेसिक प्रोसेस क्या है, लाइक हाउ डू यू प्रिपेयर मोज़रेला? So basic preparation of mozzarella रहता है, we need the fresh milk, फिर we need culture, मतलब कौन सा मिल्क? cow milk. I make with the cow milk. I mean, we can use any kind of We milk? can नहीं, we need fresh locally okay sourced milk. आप pasteurized milk यूज कर सकते हैं, बट homogenized milk नहीं यूज कर सकते. Okay, can you give me the difference? Pasteurized means milk has been heated to 80 degree and Okay. cool it down. It has still all the protein, fat and everything. Homogenized is a complete like heritage milk. आप heritage milk लोगे तो आप उस पर लिखा रहेगा homogenized and हाँ. pasteurized, ठीक है ना. उस मिल्क से आप चीज़ नहीं बना सकते हो, क्योंकि उसमें जो है ऑलरेडी बहुत सारा फैट परसेंटेज, प्रोटीन परसेंटेज निकला रहता है. मतलब क्या होता है होमोजेनाइज्ड, मतलब what exactly happens? Homogenized means okay, they remove the protein. Okay. Okay, they remove the protein, they remove the carbohydrate, they remove the fat. तो जब आप चीज़ बनाओगे, ठीक है ना, आर्टिसनल चीज़, फ्रेश चीज़ बनाते हो या एज चीज़ भी बनाते हो, तो यू नीड राइट सोर्स ऑफ प्रोटीन, you need okay exact source of exact amount of okay protein, exact amount of carbohydrate, exact amount of fat. Okay. ठीक है ना. So cheese, fresh artisanal cheese you can make with fresh milk, dairy farm, okay, the milk which comes from the dairy farm. तो उसको कुछ प्रोसेस नहीं होना, बट जैसे ही निकला, हाँ, मिल्किंग हुआ, ठीक है ना, that has to be used for cheese हाँ, making. that has to be used for the cheese. आपको उसको पैस्चराइज करना पड़ेगा, Okay. ठीक है ना, फॉर द सेफ्टी. हाँ, कोई भी मिल्क आता है, आप डेयरी फार्म से भी लेंगे तो आप उसको, देयर इज अ टेस्टर, उसमें टेस्ट करना रहता है कि अभी जैसे काउ मिल्क में उसमें फैट परसेंटेज कितना है, तो उसमें 5% से ज़्यादा फैट परसेंटेज नहीं होना चाहिए, बिटवीन 3.5 to 5% रहना चाहिए चीज़ बनाने के लिए. चीज़ बनाने के लिए, विच इज़ अ गुड ओके, लाइक हाउ इन ऑर्डर टू मेक चीज़ वी नीड अ गुड क्वालिटी ऑफ मिल्क. So there are some parameters which will define कि milk सही है initially. So Okay. whenever we take the milk okay from the local dairy farm, every day we check the fat percentage. ठीक है ना, every day we check the TDS. Okay. ठीक है ना, every day we check the pH. So these things are the basic parameters which we check and consistent ही रहता है. मतलब आइडियली कितना रहना चाहिए? आइडियली आप देखोगे तो जो फैट परसेंटेज है काउ का वो 3.5 to 5% के बीच में रहना चाहिए. बफेलो का अराउंड 4 to 7 के बीच में रहना चाहिए. ओके. ठीक है ना. पीएच आप देखोगे तो बिलो 7 रहना चाहिए, काउ एंड बफेलो दोनों का. ओके. बिलो 7 रहना चाहिए. टीडीएस डिपेंड करता है, मतलब आई गेस बिटवीन 30 to 70 के बीच में रहना चाहिए. ओके. तो ये चीज़ है, बट पीएच एंड फैट परसेंटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. Okay. क्योंकि जब हम चीज़ बनाते हैं तो उसी को पीएच को ही कम लेके आते हैं. एग्जाम्पल मोज़रेला. अभी जैसे मोज़रेला बना रहे हैं तो जब मोज़रेला को स्ट्रेच करने के लिए मोज़रेला का जो कर्ड होता है उसका पीएच होना चाहिए 5.5. Okay. मिल्क का जो पीएच होता है, जब इनिशियली मिल्क आता है तो उसका पीएच होता है अराउंड 6.6 6.7 के आसपास. उसको हम लोग रिड्यूस करते हैं एंड जब वो 5.5 तक आ जाता है देन हम लोग हॉट वाटर डाल के उसको स्ट्रेच करते हैं. मतलब उतना पीएच नहीं रहेगा तो लाइक स्ट्रेच नहीं होगा. स्ट्रेच नहीं होगा. अगर सपोज आपने मिल्क लिया और 6.7 रहा, उसको आपने रिड्यूस कर रहे हैं 5.5 5.4 5.3 तक. ये जो विंडो होता है ना, इसी में चीज़ बनता है. ओके. प्रिपरेशन इसी में होता है, इसी को 6 आवर्स 7 आवर्स 8 आवर्स टाइम लगता है. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रेश चीज. राइट. ठीक है ना. आई मेक ओनली ओके फ्रेश चीज. In fresh cheese also we have 1000 varieties of cheese, but I am specialized into 5 kind of cheese.
उसमें से आप एक तो बोल सकते हो बाई प्रोडक्ट है, Hmm. बट मेन थिंग इज द मोज़रेला. Right. So when we'll go more in detail about the process and all. राइट. हाँ हाँ. But before that, like this Hyderabad region is not like a cheese centric space. राइट. हाँ 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 हाँ. But making a cheese themed cafe, like how did that work out? इफ यू सी द हैदराबाद इज फेमस फॉर हैदराबाद का चार मीनार, Right. हैदराबाद की बिरयानी. Hmm. आई वांटेड टू आल्सो ऐड हैदराबाद का चीज. Okay. Sounds interesting. As I mentioned कि I am very passionate about the milk, Hmm. ठीक है ना, about the cheese and everything. I wanted to know कि मिल्क के अंदर में क्या हो रहा है. हाँ. मिल्क के अंदर में इफ़ यू ब्रेक डाउन ऑल्सो उसमें बहुत सारे लेवल्स रहते हैं. अभी जैसे आप 20 लीटर्स मिल्क ले रहे हो Hmm. और उसमें का आपको प्रोडक्ट मिल रहा है 2 kg, Right. तो 18 लीटर्स कहाँ गया, Hmm. विच फैसिनेटेड मी. एंड तब मैंने सोचा कि नहीं, मैं चीज़ बनाऊंगा. फिर मैंने सोचा मैं हैदराबाद में ही चीज़ बनाऊंगा. ठीक है. द रीज़न आई हैव चूजन हैदराबाद प्लेस because Hyderabad made me today what I am. Hyderabad has given me identity. So now it's my time to give thank in return. So to give something back to the city. So in return, cheese दे रहे हाँ, सबको. क्योंकि we are okay. What we are is because of when we started roastery and over a period of time now people know me. So it's what I am today. It's because of what Hyderabad made me. So it's the kind of I wanted to say thank you, and that's how the PS cheese came. Hmm. Okay. So यही चीज़ है. हैदराबाद इज फेमस फॉर हाँ. चार मीनार, हैदराबाद इज फेमस फॉर बिरयानी. Right. ठीक है ना. तो मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ हैदराबाद इज फेमस फॉर चीज, Cheese. पीएस चीज का. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि नॉर्मली जो भी कैफे या जो भी रेस्टोरेंट शुरू करते हैं, हाँ हाँ. इट्स ऑलवेज व्हाट्स रनिंग अराउंड, मतलब जो भी चल रहा है मार्केट में वही लगाने की सोचते हैं, बट नॉट समथिंग विच इज नॉट एट ऑल अवेलेबल इन द मार्केट. राइट. हाँ हाँ हाँ. सो दैट्स वेयर आई फील पीएससी's कैफे हैज रियली मेड अ मार्क और एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट कर ली जी. क्योंकि ऐसा कहीं पे नहीं कहीं मिलता. पे भी नहीं. हाँ. थ्रू आउट द सिटी यू विल फाइंड इट नोवेयर. हाँ. So my brother always says that कि like if you are building anything, and I also believe in that, product should be there. There should be something which okay you talk about it. Right. We always build anything which is product centric. तो इसलिए हमने जो है मैंने चीज़ सीखा. And then we have made PS Cheese Café, which revolves around the fresh cheese, only fresh cheese. Okay. So मतलब what do you have like fresh cheeses in the cafe? We make 5 kind of the fresh cheeses. Okay. The first one is mozzarella, stretch mozzarella. Next one is block mozzarella. The third is feta. The fourth is cream cheese, and the last one is ricotta. Okay. Okay. So these 5 kinds of cheese we make at PS Cheese. मतलब where did you learn all this? I have learned online. Okay. I have traveled Puglia many times and पढ़ा, मतलब अभी भी पढ़ता हूँ, डेली पढ़ता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं. ठीक है. और जितना मैं पढ़ूंगा उतना इंफॉर्मेशन मुझे मिलता है. चेंज करता हूँ प्रोसेस. ठीक है. उसको कैसे मॉडिफाई करना है, कैसे उसको अच्छे से और अच्छा प्रोडक्टिव बनाना है. तो इट्स ऑल द स्टडी. या ट्रू. आई मीन इवन आई वाज, एक टाइम था मैं भी चीजेस के बारे में स्टडी कर रहा था. लाइक इटली ये चीज, लाइक व्हाट्स द बेसिक आइडिया ऑफ क्रिएटिंग अ चीज. सो पढ़ते गया बट इट नेवर स्टॉप. राइट. कुछ ना कुछ ये चीज वो चीज खत्म ही नहीं होते. इफ यू सी व्हाट वी डू इज आर्टिसनल चीज. ठीक है ना. इन आर्टिसनल चीज में आई मेक ओनली 4 काइंड ऑफ चीज. रिकोटा इज द बाई प्रोडक्ट. ओके. इफ यू काउंट, रिकोटा इज अ बाई प्रोडक्ट. वो ऐसा नहीं है कि आपने पनीर लिया और मतलब अब बहुत सारे वीडियोस में ऐसा है कि आप पनीर लिए और उसमें क्रीम डाल दी और उसको ब्लेंड किए, वो रिकोटा हो गया. रिकोटा वैसा नहीं होता है. रिकोटा इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ द मोज़रेला वे. ठीक है. तो आप देखेंगे तो फ्रेश चीज में भी देयर आर 1000 वैरायटीज ऑफ चीज. लाइक मोज़रेला में ही आप देखेंगे तो मोज़रेला में हैज अ फैमिली बुराटा, बोकोंचिनी. ठीक है ना. आप फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो फिर आप हलूमी देखेंगे. ओके. अगर सपोज आप प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं और एंडिंग में आपने कुकिंग के बदले में कुछ, कुकिंग में अगर सपोज आप बॉइलिंग वाटर के जगह पे या प्रेसिंग के जगह पे आपने कुछ दूसरा प्रोसेस यूज किया है, तो इट कम्स आउट डिफरेंट चीज. सो इन फ्रेश चीज ओनली वी हैव 1000 वैरायटीज ऑफ चीज. अगेन इन एज चीज आल्सो वी हैव 1000 वैरायटीज ऑफ चीज. आपने सुना है पार्मेजान चीज हो गया, चेडर चीज हो गया, गुडा हो गया. ठीक है ना. ब्लू चीज बहुत फेमस हुआ है अभी, बहुत फेमस कर दी. तो ओके 1000 वैरायटीज ऑफ चीज है और एवरी डे कोई ना कोई चीज नया, मतलब people are still working and finding some new cheese.
mean, just wanted to understand like what are the parameters Uh-huh. जिसके अंदर we play and we get all different cheeses. कुछ तो रहते like type of milk, type of place, type of animal. Uh-huh. So ऐसे कितने parameters है? In order to get the fresh additional cheese, हाँ. if you talk about, तो सबसे basic parameter, first important parameter is milk. Okay. Milk plays very important role. Okay, you need fresh raw milk. You can pasteurize it later, हाँ. but fresh raw milk, locally sourced. After milking, you should start the process within 2 to 3 hours. चीज बनाने का. चीज बनाने के लिए. Okay. If we leave it for too long, what no, happens? You will not get the cheese. Okay. क्योंकि again the protein, the bacteria which is present inside the milk will not able to coagulation. Okay. Coagulation form ही नहीं होगा. तो जब मिल्किंग होता है, मिल्किंग से मैक्सिमम 2 to 3 आवर्स के अंदर में आपको प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ता है चीज का. So what is exactly coagulation मतलब? कोगुलेशन मीन्स आप बेसिकली उसको आप कल्चर डालते हो और रेनेट डालते हो ताकि सारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स जो है, ठीक है ना, मिल्क के अंदर जो भी प्रेजेंट है वो एक साथ आ जाए और चीज कर्ड फॉर्म होता है. Okay, so okay, रेनेट आपने बताया था. हाँ, हाँ. What is that? रेनेट आप जैसे मतलब हर एक घर में पनीर बनता है. हाँ. हम लोग पनीर बनाते हैं वेनिगर से बनाते हैं, लेमन से बनाते हैं, सिट्रिक एसिड से बनाते हैं. राइट. ठीक है ना. चीज बनाने के लिए जो चीज चाहिए होता है वो है रेनेट. सो ये लेमन्स विनेगर इसके साथ चीज नहीं, चीज नहीं बन सकता. आप कहीं भी आप गूगल कीजिएगा, अगर आपको बताते हैं कि वो आप मोज़रेला बनाएंगे सिट्रिक एसिड से या विनेगर डालोगे, ये डालोगे, नहीं. यू हैव टू यूज रेनेट. रेनेट इज द मेन कंपोनेंट फॉर द चीज. I mean, what exactly is that? Rennet is, you can say, microbial. Okay. It's a bacteria. हाँ, bacteria. Lab grown bacteria, you can say that. Okay. And it's 100% veg. Okay. तो चीज जो भी बनती है, एक और चीज लोगों के दिमाग में रहता है, जो चीज रहता है वो नॉन वेज होता है. बहुत लोग सोचते हैं. क्यों ऐसा क्यों? तो जो पहले जो रेनेट आता था ना, वो एनिमल के ब्लैडर के अंदर रहता था. ओके. ऑलमोस्ट 40-50 ईयर्स बिफोर. तो बहुत लोग अभी भी सोचते हैं ना कि जो रेनेट आता है ना वो एनिमल के अंदर ही बनता है. अब जो रेनेट जो भी आती है ना वो लैब ग्रोन होती है, माइक्रोबियल रेनेट, और ये वेजिटेरियन होती है. तो जो भी चीज़ इंडिया में जो बनती है, आई एम नॉट श्योर अबाउट कि बाहर का कैसा है, बट जो इंडिया में ओनली वेजिटेरियन रेनेट, एनिमल रेनेट इज बैन. ओके. इंडिया में बैन है वो? हाँ, इंडिया में बैन है. वर्ल्ड में बहुत जगह बैन है, ठीक है ना. आई गेस कुछ कुछ कंट्रीज में अलाउड है, बट मैक्सिमम जगह बैन ही है. मतलब क्यों, लाइक प्रॉब्लम क्या है उससे? अगेन पीपल सी कि एनिमल के अंदर का दे डोंट वांटेड टू प्रीफर, लाइक जिलेटिन हो गया. ठीक है ना. अब जिलेटिन, नॉट श्योर कि जिलेटिन कहाँ से बना हुआ है. I mean, still people use red pasties के लिए. People use it, but most of people will, अगर सपोज आप जिलेटिन मुझसे पूछोगे कि ये क्या है, कौन से सोर्स से, एनिमल सोर्स है या प्लांट सोर्स है, ठीक है ना, बट मुझे पता ही नहीं है. ओके. क्योंकि आप जिलेटिन का बॉक्स भी देखोगे ना तो उसमें ये डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ कि ये कहाँ से डिराइव किया गया है. बस जिलेटिन करके लिखा रहता है. जिलेटिन करके लिखा रहेगा. आप जैसे जिलेटिन को गूगल करोगे, कुछ भी आप लेते हो, आप उसके पीछे का जो इंग्रेडिएंट्स है ना गूगल करो उसको, तो उस पर आपको दिखेगा कि ये जो है एनिमल से लिया गया है या प्लांट से लिया गया. बहुत सारे तो ये भी बोलते हैं कि मेरा जो है ये वीगन फूड है, बट उसमें जो बहुत सारे कभी में आप देखोगे ना जो उसमें स्टरलाइजिंग होता है, उसके पीछे आप देखोगे तो E71, E72, E140 इमल्सिफिकेशन जो भी डालते हैं, कभी कभी वो जो है ना उसमें मेंशन नहीं होता है कि वो एनिमल से डिराइव किया गया है, प्लांट से डिराइव किया गया है. कुछ कुछ में डायरेक्टली मेंशन रहेगा कि ये प्लांट से डिराइव किया गया है, बट किसी किसी में आपको लिखा रहेगा स्टेबलाइजर में कि मे बी एनिमल, मे बी प्लांट. मे बी. हाँ, जब गूगल ही बोल रहा है तो फिर आप उसको प्लांट बेस्ड नहीं बोल सकते, आप वीगन नहीं बोल सकते, आप उसको डेयरी फ्री बोल सकते हो. राइट. आप उसको, जैसे बहुत होता है प्लांट बेस्ड मिल्क होता है, कोकोनट क्रीम जो होता है वो बोलते हैं ये वीगन होता है. आपको चेक करना पड़ेगा. इवन आप डाबर का भी बॉक्स उठा के देखो आप, वो नहीं लिखता है कि वीगन है. सो पनीर इज नॉट डन थ्रू रेनेट? नो, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पनीर एंड चीज. सो इज द पनीर चीज और नॉट? दिस इज वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी. सो आप जैसे अगर पनीर बोलोगे, आई एम नॉट श्योर हाउ विल यू डिफाइन दिस. जैसे मेरा 2-3 क्वेश्चन है. जैसे अगर आप बोलते हो कि पनीर चीज है, तो फिर इंडिया को चीज कंट्री क्यों नहीं बोला जाता है? ये तो सोचने वाली बात है कि नहीं? आप बोल रहे हो कि जब पनीर चीज है तो आप बोलोगे छेना भी चीज है. हाँ, क्योंकि अभी लाइक फॉरेन रेस्टोरेंट शेफ्स जो भी है वो सब लोग इंडियन चीज करके रिप्रेजेंट करते हैं पनीर को. सो टेक्निकली इट्स नॉट अ चीज.
मेरे हिसाब से Okay. there is a thin line between paneer and cheese. Still we are figuring it out that paneer comes under cheese or not, क्योंकि artisanal cheese and paneer process making is completely different. Okay. Example, when we make artisanal cheese, Hmm. example I'm talking about the mozzarella. Okay. mozzarella ले लो, fresh stretch mozzarella. तो आप जब मोज़रेला बना रहे हो तो उसमें आप मिल्क को हीट करते हो। हीट करना मतलब मैक्सिमम 45 डिग्री। बट जब आप पनीर बना रहे हो तो आप मिल्क को बॉयल करते हो। हाँ. तो जब आप बॉयल करते हो तो प्रोटीन जो है ना बहुत ब्रेक हो जाता है। Okay. The concept of cheese is, suppose if you are taking 10 liters of milk, you will get 1 kg of the cheese. Cheese is costly also because of that. And with the paneer it is different. When you make the cheese, we heat the milk. So that all the protein, all the carbohydrate, fats, others, factors will join it. But when we make paneer, we boil the milk. तो उसमें coagulation हो ही नहीं पाता है। So मतलब exactly होता क्या है, like हम बोलते हैं फाड़ दिया दूध को करके, ये फाड़ने के टाइम एक्चुअल होता क्या है? तो जब आप फाड़ते हो ना तो मिल्क बहुत गर्म होता है, तो जो उसके अंदर प्रोटीन होता है ना, चीज में भी अच्छा, मतलब पनीर में भी इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। बट आप देखोगे आप पनीर रख दो और मोज़रेला रख दो तो मोज़रेला हैज अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन एज कंपेयर टू पनीर। ओके. एंड प्रोसेस इज आल्सो डिफरेंट। जब मिल्क को गर्म करते हैं ना तो आप जैसे सपोज आपने किसी को गर्म किया तो उसके अंदर का जो भी बैक्टीरिया है ना वो डेड हो जाता है। बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट, उसी के अंदर रहता है, उतना इफेक्टिव काम नहीं करता है। चीज में जो है ना, आप कोई भी चीज बनाए, सपोज आपने पामेज़ान ले लिया, पामेज़ान ले लिए, पामेज़ान चीज का क्या एग्जांपल है, पहले आप उसको फ्रेश बनाओगे, फ्रेश मतलब फ्रेश चीज बनाते हो, फिर उसको आप स्टोर करते हो, राइजिंग करते हो, हाँ राइजिंग करते, स्टोर करते हो आप फॉर एटलीस्ट 9 months। मिनिमम टाइम फॉर द पामेज़ान चीज इज फॉर 9 months। तो उसमें जो भी बैक्टीरिया होता है ना, पहले वो व्हाइट, मतलब अब चीज बनाओगे तो पहले व्हाइट कलर का होता है, धीरे धीरे बैक्टीरिया वर्क्स इन इट, वी गिव फूड टू द बैक्टीरिया। मतलब हमने फ्रेश चीज बना लिया, एक मोल्ड में रख लिया, फिर उसको सॉल्टिंग करके उसको स्टोरेज रूम में रखा। आफ्टर स्टोरेज में रखने के बाद एवरी डे और वंस इन वीक वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम लाइक अ बेबी टिल 9 months। वी हैव टू फीड देम। सॉल्टिंग करते समय बैक्टीरिया डजंट डाई। सॉल्टिंग करते समय जो शुगर होते हैं ना, लैक्टोज, दैट विल ब्रेक डाउन, नॉट द प्रोटीन। ओके, सो बैक्टीरिया विल स्टिल, गुड प्रोटीन विल स्टे। जो शुगर होंगे ना, ठीक है ना, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, लैक्टोज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, बट प्रोटीन विल बी प्रेजेंट। दैट्स व्हाई द चीज इज गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। मतलब माय क्वेश्चन इज, जब मैं इटली फ्रांस को देखता हूँ, probably they are known as the cheese countries because they have variety of cheeses, right? Not just one cheese, हजारों चीजें हैं उनके पास। अपने यहाँ तो सिर्फ एक पनीर और थोड़े बहुत लोकल है। हाँ नहीं, अपने पास भी अब जैसे ऐसे बोलेंगे, अब ऐसा बोलेंगे तो हमारे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बंडल चीज़ हो गया, अब बंडल चीज़ कलकत्ता का है, वेस्ट बंगाल का है। कलाड़ी चीज़ हो गया, काइंड ऑफ मोज़रेला ही होता है, कश्मीर का है, ठीक है। और जैसे जैसे नॉलेज होगा ना लोगों को, जैसे जैसे एक्सपोजर होगा लोगों को, इंडिया से भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें बनने शुरू हो जाएंगी। इट्स ऑल अबाउट द एक्सपोजर। आई एम श्योर दैट अ टाइम विल कम वेयर India will be also knowing for different varieties of cheese that it was invented in India only. People are working on it. The more information, the more knowledge people will have. They are working on it. What's the difference between these artisanal cheeses and processed cheese, which we have been eating for like ages? There is a lot difference. Processed cheese is not a cheese. तो क्या है वो? वो processed है. मतलब चीज है। Except cheese, everything is there. Example, I'll give you the basic thing. Milk. What is the shelf life of the milk? 3-4 दिन, एक हफ्ता मैक्स। एक हफ्ता मैक्स। अगर आपको मिल्क को 1 महीना चलाना है, फ्रेश मिल्क, इज इट पॉसिबल? नो। अगर आप उसमें कुछ भी सेल्फ लाइफ डालने के लिए करते हैं, टेट्रा पैक जैसे, उसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है, राइट। तो बट उस मिल्क का टेस्ट और फ्रेश मिल्क का टेस्ट, उस मिल्क का न्यूट्रिशन वैल्यू एंड फ्रेश मिल्क का न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अलग होता है। हाँ, ट्रू, राइट। तो प्रोसेस चीज़ में जो है ना, चीज़ बहुत, उसका सेल्फ लाइफ भी बहुत ज़्यादा है। तो आप जो प्रोसेस चीज़ बना रहे हो, आप उस, जब कोई भी प्रोसेस चीज़ ले लो आप, प्रोसेस चीज़ खाने के लिए बहुत टेस्टी है, खाने में पैलेटेबल बहुत है, इसलिए बहुत ज़्यादा चलता है। मतलब क्या क्या जाता है उसके अंदर? उसके अंदर मतलब मैक्सिमम चीज़ आप जैसे बताओगे इम्प्योर ही रहते हैं ना,
अभी जैसे एग्जांपल आप नेस्कैफे को ले लो और स्पेशलिटी कॉफ़ी ले लो आप। हाँ अब नेस्कैफे का ले लोगे तो उसकी कॉफ़ी की शेल्फ लाइफ रहती है आपकी 1 साल, 2 साल, 3 साल। स्पेशलिटी कॉफ़ी मैक्सिमम 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने। हम्म तो अगेन द फ्रेशनेस का बात होता है। आप उसमें राइट प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर रहे हो, किसी भी हाँ चीज़ में अगर आप प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर रहे हो, शेल्फ लाइफ बहुत बढ़ बढ़ जाती है। जाती है। शेल्फ लाइफ बहुत, और टेस्ट तो फिर अलग हो जाता है ना, बहुत अलग हाँ हो वो जाता है। चेंज हो जाता है। आप जैसे आर्टिसनल चीज़ लोगे, आर्टिसनल फ्रेश चीज़, उसका जो प्रोटीन होता है दैट्स वेरी गुड हम्म फॉर हेल्थ। प्रोसेस्ड चीज़ इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। हम्म आई गिव यू अ बेसिक एग्जांपल। इफ यू आर इल, डॉक्टर विल से आप बाहर का चीज़ मत खाओ, हाँ बाहर का फूड मत खाओ, डोमिनोज पिज़्ज़ा मत खाओ। इफ़ यू गो टू इटली, हम्म अगर आपकी तबीयत भी खराब है तब भी आपको पिज़्ज़ा देंगे। क्या बात कर रहे हो? फिर आप, ठीक है ना, मैं पुलिया गया हुआ था। पुलिया हाँ इज़ द ओके प्लेस जहाँ पे चीज़ बना है। हाँ तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी वहाँ पे, ओके मतलब फीवर हो गया था इंटरेस्टिंग मुझे, हाँ। हाँ तो मैंने लैंडलॉर्ड थे, हाँ हाँ, तो मतलब जिनके मैं चीज़ सीख रहा था, ये हम्म सब सीख रहा था, तो उन्होंने मुझे खाने में पिज़्ज़ा ही दिया। नेक्स्ट टाइम व्हेन आई एम नॉट वेल आई एम गोइंग टू इटली। हाँ, तो फिर मैं सोचते रहा कि मेरी तबीयत भी खराब है, वहाँ पे सब लोग मतलब पिज़्ज़ा पास्ता ही खा रहे हैं, ठीक है बीमार हम। हुए तब भी। हाँ, हमारे यहाँ कैसे जो ऐसे रोटी सब्जी दाल लोग खा रहे हैं, हाँ वहाँ पे पिज़्ज़ा पास्ता खा रहे हैं। ओके द डिफरेंस इज, वहाँ पे लोग फ्रेश बनाते हैं। हम्म अभी जैसे वहाँ का पिज़्ज़ा आप देख लीजिए, हमारे यहाँ का रोटी सब्जी मलाई। मतलब हर घर में वो लोग खुद ही बनाते हाँ, हैं लाइक इन हाउस। हर, अभी हमारे यहाँ रोटी सब्जी मलाई बना, हाँ ठीक है ना। एग्जाम्पल आप पिज़्ज़ा ले लीजिए, सिंपल पिज़्ज़ा लीजिए। आप जो पिज़्ज़ा लीजिएगा, अभी हम्म जैसे आप मैं ये चीज़ पीएस चीज़ में भी बोलता हूँ, हम्म ठीक है ना। पीएस चीज़ में भी इफ आई ओके, आई से पिज़्ज़ा दैट इट्स अ रोटी सब्जी एंड मलाई, क्योंकि जो डो बनाते हैं ना, वी हम्म मेक इट फ्रेश एवरी डे। जो सॉस होता है दैट इज़ फ्रेश एवरी डे। हम्म जो चीज़ बनाते हैं दैट इज़ फ्रेश। तो इट इज़ रोटी सब्जी एंड मलाई। हम्म तो अगर आपकी तबीयत भी खराब है और अगर आप ओके रोटी सब्जी मलाई, रोटी हम्म सब्जी खा रहे हो, तो नो हार्म, आपको खाना ही है। हाँ, वो तो नॉर्मल है। हाँ, हाँ हाँ, हाँ। तो इटली में सब लोग वही खाते हैं, पास्ता भी फ्रेश रहता है, उन लोग खुद बनाते हैं। हर एक घर में चीज़ बनता है, ठीक है वो ना। हर एक घर डो में भी खुद ब्रेड ही बनता है, बनाते हैं। हर एक घर में ब्रेड बनता है, हम्म ठीक है ना। हर एक घर में ब्रेड बनता है, सॉस बनता है, ठीक है ना। उनका वही खाना, हमारा रोटी सब्जी मलाई है, हमारा चावल दाल है, हाँ ठीक है ना। वहाँ पे हमारा रसम है, पास्ता पिज्ज़ा वहाँ वहाँ पे पे। पास्ता पिज़्ज़ा है। तो आया तो वहीं से है ना, हाँ ठीक है ना। तो इसलिए मतलब अब अगेन, प्रोसेस चीज़ आप यहाँ पे डेली खाओ, ठीक है ना, हम्म और फ्रेश चीज़ खाओ, बहुत डिफरेंस होगा। आप पीएस चीज़ में आप कुछ भी खाना खा लो, हम्म ठीक है ना। वी डू नॉट ऐड एनी काइंड ऑफ मेयोनीज, हम लोग प्रोसेस चीज़ यूज़ भी नहीं करते हैं, हाँ बिकॉज सारा कुछ इन हाउस बनाते हैं। आप कितना भी खाना खा लो पीएस चीज़ में, 1 घंटे बाद आपको भूख लगेगा। ओके ईजिली डाइजेस्टेबल, फ्रेश है इसलिए। वेरी फ्रेश। हाँ जो चीज़ होता है ना वो ब्रेक डाउन हो जाता है ना, ठीक है ना। प्रोटीन ब्रेक डाउन जो अमीनो एसिड बहुत हम्म बहुत ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। सो बेसिकली चीज इज गुड फॉर हेल्थ। आर्टिसनल चीज़, हाँ अभी फ्रेश चीज़, नॉट द प्रोसेस चीज़। चीज व्हेन यू आर ओके सेइंग चीज़, डू नॉट इंक्लूड प्रोसेस चीज़। बट हम्म इंडिया में हम लोग प्रोसेस चीज़ ही खाते आए हैं। इवन मैं भी हम्म, बचपन से प्रोसेस चीज़ ही खाते आया हूँ। हाँ जब मैं पढ़ा कि प्रोसेस डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस चीज़ एंड आर्टिसनल चीज़ में क्या डिफरेंट है एग्जैक्टली, हम्म ठीक है ना, तब आई वाज सरप्राइज्ड। व्हाट्स द एग्जैक्ट डिफरेंस? एग्जाम्पल, प्रोटीन, अगर आपको प्रोटीन लेना है, यू कैन ईट रिकोटा, ओके which is a very good source of protein. You can हम्म have mozzarella, which is artisanal cheese. मतलब you can have parmesan cheese also, ओके which is okay aged cheese but has a good source of protein. हम्म ठीक है, आप खाने के ऊपर उसको डाल सकते हो, it will have a flavor also. हम्म बट आप अगर उसी में अगर आप कोई प्रोसेस चीज डाल रहे हो, तो हम्म यू विल नॉट गेट द प्रोटीन परसेंटेज, प्लस इट इज डैमेज योर हेल्थ ऑल्सो, क्योंकि उसमें बहुत ओके सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ठीक ट्रू है। जब प्रिजर्वेटिव्स होंगे तो फिर इट्स बैड फॉर हेल्थ। एंड दैट्स व्हाई डॉक्टर सेज कि आप नहीं खाना। प्रोसेस चीज नहीं खाओ, पिज्ज़ा पिज्ज़ा मत खाओ। तो अभी जो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड मोज़रेलास मिलते हैं हाँ, हाँ, हाँ। सो दोज आर लाइक प्रिजर्वेटिव फ्री और अभी बहुत सारे लोग प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, डिपेंड्स अपॉन द शेल्फ लाइफ। ओके जैसे मिल्क का शेल्फ लाइफ 3 दिन से ज़्यादा नहीं होता है। हम्म जब आप मोज़रेला बना रहे हो हम्म विदाउट प्रिजर्वेटिव्स, उसका शेल्फ लाइफ मैक्सिमम 7 to 10 days रहेगा, मोज़रेला का मोज़रेला ओके का। उससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते हो। अगर आप रख रहे हो, मतलब सिंपल आप पैकेट ले लो, हाँ कोई भी कंपनी का पैकेट ले लो, उसका अगर हम्म शेल्फ लाइफ मोर देन 10 days है, हाँ कोई भी मतलब फ्रेश चीज़ का आई एम टॉकिंग अबाउट। राइट एज चीज़ तो ऑलरेडी एज होता है, तो उसका तो हम्म सेल्फ लाइफ ईयर्स होता है। राइट फ्रेश चीज़ आई एम टॉकिंग हम्म अबाउट,
आप कोई भी फ्रेश चीज़ ले लो और उसके ऊपर का आप पीछे पैकेट देख लो, उसमें जो भी बाइंडर्स होते हैं, उसमें जो भी मतलब लिखे रहेंगे कि मतलब नेम्स, उसको आप सर्च कर लो, वो रहेगा, स्टेबलाइजर रहता है, वो रहेगा, प्रिजर्वेटिव्स रहेगा। मतलब ठीक अभी है, कोई है जो बिना प्रिजर्वेटिव्स के मोज़रेला फ्रेश चीजेस दे रहा है? PS चीज वी में कितना आई मीन कैफेज, बट हाँ, रिटेल में अगर कुछ चाहिए, घर को चाहिए, तो कुछ है? और आर यू प्लानिंग एनी टाइम इन द फ्यूचर? फ्यूचर में भी अपना है। प्लानिंग। हाँ हाँ, अभी तो मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि आप कुछ कुछ सिटीज में कुछ कुछ लोग बना रहे हैं, ठीक है ना, मोज़रेला बना रहे हैं। मोज़रेला बहुत डिफिकल्ट है बनाना, क्योंकि अगेन गर्म पानी में हाथ डालना पड़ता है, बॉइलिंग हॉट, ओके, वी हैव टू पुट फिंगर इन द बॉइलिंग हॉट वाटर 100 डिग्री, आई मीन यू लिटरली हैव टू वी पुट हैव टू इट। लिटरली पुट फिंगर इन द बॉइलिंग हॉट मतलब वाटर। कुछ ऐसे लकड़ी वकड़ी लेके नहीं कर हाँ, तो सकते? वो तो करते हैं ना, बट हाथ जाता ही जाता है, अच्छा। ठीक है ना। इसलिए जब हम लोग मोज़रेला बनाते हैं या कभी भी कोई भी वीडियो देखोगे ना मोज़रेला का, उसमें कोई लोग ग्लव्स नहीं पहनता है। हाँ, दिस आई गेट अ लॉट्स ऑफ क्वेश्चन कि आप ग्लव्स क्यों नहीं पहनते हो जब ये मोज़रेला ऑलरेडी बना रहे गर्म हो। है ना पानी। हाँ हाँ, उसमें बैक्टीरिया कहाँ से तो रहेगा? वो मतलब आई वांटेड टू से थ्रू योर हाँ चैनल कि जब हम लोग मतलब मोज़रेला बना रहे हैं ना, तो हम लोग गर्म पानी में हाथ डालते हैं, और जब भी ग्लव्स पहनेंगे ना, तो पानी जो है ना ग्लव्स के अंदर चला जाएगा, विच विल बर्न द फिंगर। राइट। इसलिए कोई भी जो भी मोज़रेला बनाता है ना, उसका हाथ बहुत साफ होता है। इन ऑर्डर व्हेन एनी चीज मेकर विल मेक चीज, he will make sure his hands are sterilized राइट 200%, राइट। okay, then we touch the cheese। तो मतलब वही है। थोड़ा हाथ का भी फील रहना। हाँ, हाथ का भी फील मतलब हाँ। आप शेप देते हो ना, हम्म। मोज़रेला को जब बनाओगे तो आप उसको देखते हो, नॉट बनता है, बुराता हाँ। में नॉट बनता है, राइट। ठीक है ना, तो वो हाथ से ही बनता है। मशीन का जो मोज़रेला रहेगा, ठीक है ना, वो फाइन चॉप्ड रहता है, ओके। ठीक है ना, उसका आपका फिनिशिंग बहुत ही प्रॉपर होगा। बट हैंडमेड मोज़रेला होगा ना, हैंडमेड बुराता जो होगा, ठीक है ना, उसका जो फिनिशिंग है थोड़ा मतलब अनइवन होता है, वो भी परफेक्ट होगा बट अनइवन रहेगा। मैं जब चीज़ के बारे में सोच रहा था, लाइक आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कितने टाइप ऑफ चीजेस है अपने वर्ल्ड में, लाइक बट नॉट द नंबर ऑफ चीजेस बट द कैटेगरी ऑफ चीजेस। category you can, if you'll define, okay, we'll have the artisanal cheese and the processed cheese. ओके। Again, in artisanal we have two kinds of cheese, the fresh cheese and the aged cheese, ओके। ठीक है ना। तो जो भी आता है इसी के अंदर आएगा। आप कुछ भी फ्रेश बनाओगे तो दैट विल कम्स अंडर द फ्रेश चीज। आप अगर फ्रेश चीज को एज्ड करते हो, ठीक है ना, सो दैट विल कम अंडर एज्ड चीज। ओके। सो तीन ही चीज है, मतलब एक फ्रेश हो गया, एक एज्ड हो गया, एज्ड। एंड ओके। प्रोसेस्ड। मतलब ऐसे। प्रोसेस डजंट काउंट अंडर, हाँ। इंडिया में लोग बोलते हैं कि ये चीज़ है, बट इफ़ यू ट्रैवल इंटरनेशनल देन वो बोलेंगे कि चीज़ मीन्स यार इधर फ्रेश और एज्ड। एज्ड। हाँ बस। मतलब वी हैव लाइक दिस सॉफ्ट, हार्ड, ब्लू। हाँ, तो सॉफ्ट मीन्स फ्रेश चीज़। ओके, वो हाँ, सब सेम थिंग, सब, एज्ड हाँ और हाँ हाँ, सॉफ्ट, ओके। जो सॉफ्ट होता है ना वो फ्रेश होगा, ठीक है ना, एंड जो हार्ड होगा ना वो एज्ड होता है। ओके। जब रेनेट के बारे में बताए थे, लाइक हाउ डू वी सोर्स रेनेट? देयर आर फ्यू वेंडर्स इन इंडिया, ओके। उन लोग के पास रहता है, तो आप वहाँ से मंगा सकते हो। जैसे मैं वर्कशॉप करता हूँ कभी भी, तो वी टॉक अबाउट द रेनेट क्लियरली कि रेनेट ये चीज़ होती है, एंड ओके इट्स लैब ग्रोन, एंड आई गिव द इन्फॉर्मेशन कि हम कहाँ कौन से वेंडर से लेते हैं, यू विल गेट इट। आई मीन लाइक आर देयर एनी वैरायटी ऑफ रेनेट्स और बस देयर एक आर ही रहता है? 1000 varieties of rennet, ओके। and for each cheese we have a different rennet. Like I use two rennets basically, one is ADC and another one is Chimex. क्या क्या? One is ADC, एडीसी। ADC, ओके। and another one is Chimex. स्काई मैक्स। Chimex, हाँ, ओके। Chimex I use for the mozzarella, stretch mozzarella. ओके, मतलब व्हाट्स द नेम एग्जैक्टली, मतलब क्या है वो? Microbial इट्स रहता अ है, लैब नेम? हाँ लैब नेम, okay, microbial grown, all are microbial grown, ओके। but it's lab grown and different, okay, way of making it. ओके। So there are 1000 varieties of rennet, there are 1000 way of using rennet, ओके। okay, and we use rennet in very small quantity. Example, for 10 kg I use only 0.8 gram, so 10 liters of the 10 milk, liters of the milk? 10 liters of the milk I'll use 0.8? 0.8 gram. बस काफी है उतना? That's enough, that's sufficient, more than sufficient ओके। in order to make cheese. I mean, like, is there any specific way to store it? Just keep it in a normal, okay, temperature, I mean, normal cool fridge. area. हाँ, हाँ, Fridge, huh? normal fridge. Okay, okay. Okay, any cheese also you keep it in a fridge between 1 to 6 degree. Do not deep freeze it, never okay. deep freeze it. Okay. अगर आप डीप फ्रीज कर रहे हो ना आर्टिसनल चीज को, ठीक है ना, फिर उसकी टेस्ट चली जाती है। आप जैसे मोज़रेला ले लो,
उसको आप डीप फ्रीज करो, जब आप डीप फ्रीज करोगे तो उसके ऊपर जो है ना आइस फॉर्म हो जाता है, तो उसका जो टेक्सचर होगा ना और उसका जो टेस्ट होगा ना वो थोड़ा मोर वाटरी हो जाएगा। उसको नॉर्मल फ्रिज में रखोगे ना टेम्परेचर बिटवीन 1 to 6, तो उसका या टेस्ट जो है ना मेंटेन रहता है। okay, when the fridge में cheeses we store, like how many days we can store fresh cheese? See, fresh cheese, like what we make, what I make, Hmm. has a shelf life of not more than, okay, 4 days or 5 days. That's room temperature or refrigerated? Free refrigerator, Only 4 to 5 days. only 4 to 5 days. Okay. Maximum is 4 to 5 days. Okay. Okay, मैं तो जो भी चीज़ बनाता हूँ, whatever the Hmm. cheese that I make it, that is used by next day only. Hmm. Like कभी कभी तो ऐसा होता है कि if I'm making cheese today and by tomorrow afternoon only वो खत्म हो जाएगा, then again Okay. it will be, the product will be out of stock, फिर मुझे नेक्स्ट डे फिर से बनाना पड़ेगा चीज़, बिकॉज इट्स एन 8 hours process. I Oh. cannot make it within 1 hour or 2 hours or 3 hours, I mean, can you break down the 8 hours? especially for the Hyderabad. Okay. Cheese depends upon the temperature, Okay. okay, a lot. So the first, okay, when the milking happens, after heating the milk, we add culture. Culture यानी rennet. No, culture, you can say the curd. Okay. Just can you give me a difference? Like what's So culture acts as a catalyst, आप बोल सकते हो. मतलब Culture, वो है क्या like? culture is a, like sado culture we have, how we make the sado culture. हाँ. So same is culture, the word is called culture. It's a catalyst. I mean, how is it like? इसका physical form क्या है? Curd, how the curd is there, how we make curd at home, the curd is culture. Okay, so you just Yes, add that curd that, to the हाँ. milk and it becomes curd. No. In general, like हाँ दूध में हम कर्ड डालेंगे तो कर्ड हो जाता कर्ड है. हो जाता है. जब हम चीज़ बनाते हैं ना, हाँ. तो आई यूज कर्ड एज एन कल्चर. So वो कहाँ से आता है? ठीक है ना, आई यूज हेरिटेज कर्ड. ओहो, okay. हाँ. कल्चर ऑल्सो यू कैन मेक इट एट होम. So you're adding normal yogurt. हाँ, normal yogurt. Okay, so another way, like when I make mozzarella, stretch mozzarella, I use curd. Okay, I use curd. We make it every day. Okay. When I make other cheese like feta, then I use culture. Culture, like I take milk, I keep it in a room temperature for 24 hours. Okay. No disturbance. It will start fermenting. Right. That's culture. अच्छा. It's a bacteria. Right. It's a Naturally yeast जैसे. हाँ, naturally grown bacteria. हाँ, okay. From the milk. Right, got That it. is culture. Okay, got it. ठीक है ना. हाँ. तो in 5 types of the cheese, for the mozzarella I use the curd. Okay, so पहले दूध को हाँ. हीट करते हैं. मिल्क को हीट किए, Then culture. देन कल्चर डाल दिए. Okay. कल्चर एक्ट्स एज एन कैटलिस्ट. कल्चर विल टेल ऑल द प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स इनसाइड द मिल्क कि कुछ होने वाला है उसके साथ में. कुछ If होने you वाला see है. inside the science, हाँ. कि कल्चर एक्ट्स एज एन कैटलिस्ट, कि Right. कुछ होगा तुम्हारे साथ में, थोड़ा रेडी हो जाओ. Okay. ठीक है ना. हम लोगों ने उसके बाद वी वेट फॉर 1.5 hour. After adding culture, we wait for 1.5 hour. Okay. Then we add rennet. Okay. And rennet also very less, and as I 0.8. mentioned, 0.8 gram. After adding rennet, we wait for 2 hours for the coagulation to be happen. Okay. Once coagulation happen properly, okay, then we'll cut it. Okay. Okay. After cutting the cheese curd, we wait for at least 2-3 hours till the pH comes to 5.5 or below that. Okay. Once the pH comes below 5.5, then we add boiling hot water and we do the stretch mozzarella. So 1.5 hour of culture, 1.5 hour of rennet, Okay. 3 hours, okay, then 2 hours of coagulation, 5 hours, and again 2 hours after cutting. So almost 7 hours, 7-8 hours. अगर इसमें कल्चर का स्टेप निकाल दे तो डायरेक्ट रेनेट डाले तो क्या होगा? The product will not come out good. मतलब जो mozzarella बनेगा, चीज़ तो बन जाएगा, डेफिनेटली चीज़ बन जाएगा, ठीक है ना, बट मे बी जो है वो उतना इफेक्ट टेस्टी नहीं रहेगा. मतलब उसका जो फ्लेवर रहता है ना, कल्चर, मतलब कल्चर डिफाइंस दैट एक्चुअल टेस्ट. ओके. अगर कल्चर आपका ज़्यादा खट्टा हो गया ना, तो चीज़ आपका बहुत सार हो जाएगा. सो बेसिकली कल्चर से टेस्ट मिलता है और रेनेट से स्ट्रक्चर मिलता है. स्ट्रक्चर में. राइट. तो कल्चर अगर खट्टा है, ठीक है ना, तो आपका जो आउटकम होगा ना बहुत खट्टा हो जाएगा. सो किसी भी टाइप का कल्चर यूज कर सकते हैं. Depends upon what cheese you are making it, and each cheese makers has their own recipe. Right. They play with the milk. Depends upon from where they are getting the milk, कौन सी सिटी में है, कहाँ पे है,
आई एम फ्रॉम हैदराबाद में मैं चीज़ बना रहा हूँ, तो व्हाट 8 hours आई एम Yeah. टॉकिंग अबाउट इज फॉर ओके हैदराबाद रीजन. अगर आप चेन्नई जाओगे तो मे बी इट विल रिड्यूस डाउन टू 6 hours. Okay. ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होता है हाँ. एंड चीज़ बनाने के लिए आपको ह्यूमिडिटी टेम्परेचर चाहिए दैट इज़ फेवरेबल. Okay. आप एसी में चीज़ नहीं बना सकते हो. आपको चीज़ बनाने के लिए यू नीड प्रॉपर वेंटिलेशन, नो एसी. तो आप जैसे पीएस चीज़ में आओगे चीज़ फैक्ट्री में, देयर इज़ नो एसी, जस्ट अ प्रॉपर वेंटिलेशन. आप कहीं भी जाओ, हाँ. ठीक है ना, मतलब जहाँ पे चीज़ यूनिट है वहाँ पे एसी नहीं रहेगा, प्रॉपर वेंटिलेशन रहता है. Right. और एसी भी है तो मेक श्योर कि टेम्परेचर जो है ना मतलब बहुत कम नहीं है, क्योंकि अगर टेम्परेचर कम रहा ना मतलब तो आइडियल फिर टेम्परेचर क्या है? ह्यूमिड रहना चाहिए. आइडियल टेम्परेचर इज ह्यूमिड 25, 25. Okay. 28. So, what inspired you to start a cheese-centric cafe in Hyderabad, and how did you find that unique market? So what I am today, Hyderabad made me what I am today. Hyderabad has given me identity. Like I'm staying in Hyderabad from last 12 years. So now it became my native place. So आप कुछ भी स्टार्ट करोगे तो आप घर से ही स्टार्ट करते हो. हाँ, right. मतलब वो यूनिक मार्केट कैसे डिड यू फाइंड आउट, लाइक मतलब हाउ डिड यू फाइनलाइज कि ओके चीज वाला कैफे भी चलेगा करके यहाँ पे? I was sure कि there is no cheese product cafe in India. And I'm very fascinated about the cheese and everything. And मतलब जैसे मैंने बताया कि हैदराबाद ने मुझे बनाया है. अगर मुझसे कुछ गलती भी होती तो लोग मुझे समझाएंगे, ठीक है ना, और बताएंगे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ. तो इसलिए मैंने पीएस चीज हैदराबाद में ही खोला. और हैदराबाद इज ग्रोइंग. आप देखोगे तो 10 साल पहले का हैदराबाद और अभी हैदराबाद में बहुत डिफरेंट है. बहुत डिफरेंस है. ठीक है ना. तो कोई भी जो नया प्रोडक्ट है, इफ़ योर प्रोडक्ट हैज़ पोटेंशियल, इट विल रन. एंड आई वॉज श्योर अबाउट दैट माई चीज़ वट एवर आई हैव लर्न इट, जो स्पेशली मॉज़रेला है, उसके लिए मैं श्योर था जो क्रीम चीज़ में बना रहा हूँ कि पीपल विल लाइक इट. एंड दैट्स व्हाई वी हैव ओपन इन हैदराबाद. Okay, before we continue, I wanted to ask one question. What's the difference between paneer, ricotta, and cream cheese? Paneer is a different process. We use lemon, we use vinegar, okay, to make the paneer. We boil the milk to get the paneer. Right. Okay. We make the cream cheese. In cream cheese, we heat the milk and we use rennet. Okay. Okay, and we allow the coagulation to happen for 72 hours. Okay, and then we take it out. That is cream cheese. That is cream cheese. Whereas ricotta is the byproduct of the whey of the mozzarella. Okay. So whatever the whey of the mozzarella left out, we take in the kitchen. We add milk and some salt to have flavor. We boil it. And when it boils to 120 degree, 140 degree, when the bubble comes, then we filter it. Okay, and then we allow all the remaining whey to be drained out, and that's okay. The leftover is ricotta. Okay, interesting. So I mean, on the internet we see everything is the cream cheese is made from paneer, the ricotta is made from paneer. So basically all three are totally different processes. Yes. So I'll tell paneer comes under different category if you consider, because paneer making is different process, cheese making is different process. When we make paneer, we boil the milk. Right. While we make the cheese, we heat the milk. Right. If you see paneer and cream cheese and ricotta, these three are all complete different. Paneer has different process. We use lemon, we use vinegar, okay, to make paneer. We boil the milk. Whereas in cream cheese, okay, what we make at PS Cheese, we use milk. We use buffalo milk, fresh buffalo milk, and rennet. Right. And okay, we allow coagulation for 72 hours. Okay, and that's how it makes little more sweet. So it is completely different than the paneer process. Right. So basically, process is different. Product is different. Product is completely different. Okay. That cream cheese that you'll get it is is a different flavor. Okay. Okay. It is not anyhow related to paneer. Ricotta again. Ricotta also is very different from the paneer and very different from the cream cheese. Ricotta is not a cheese. It's a byproduct of the cheese. हमने बहुत मतलब 2 साल 3 साल पहले मैंने भी एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे. पनीर ले रहे थे, क्रीम ले रहे थे और उसको ब्लेंड कर दिए. वो रिकोटा हो गया. नहीं, वो रिकोटा नहीं होता. ओके. तो रिकोटा का जब आप पढ़ोगे तो मुझे मालूम चला कि इज द वे इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द मोज़रेला वे. जब मैं मोज़रेला बनाता हूँ उसका जो वे बचता है, उस वे को आई टेक इट, वी ऐड सम मिल्क,
some salt, and we boil it to Okay. 140 150 degree. फिर उसको हम लोग स्ट्रेन करते हैं. Okay. Okay, and that product that we get it, that is ricotta. Okay. So Got there's a it. lot of difference between Difference. paneer, Uh, cream cheese and ricotta. बहुत different है. Guys, so it's not the same. Huh? It's not the same. It's not the same It's at never all. the same. It's never the same. Yeah. आप बोलोगे कि पनीर से जब बनाया मैं क्रीम चीज बना रहा हूँ. नहीं, वो और एक अलग प्रोडक्ट है. तो वो प्रोडक्ट ही नहीं है. मतलब वो तो चीज के अंदर आएगा ही नहीं ना. हाँ, हाँ, right. वो तो आएगा ही नहीं चीज के अंदर. तो प्रोसेस ही अलग है. Right. So what are the biggest challenges you faced when you are setting up PS Cafe? The biggest challenges I have faced is milk. Okay. Milk and milk. Okay, so like what Because exactly? in order to make cheese, I need fresh milk, fresh raw milk from the dairy farm. Milk is very important factor because I know from where I can get the rennet. Rennet मेरे पास आ गया था. ठीक है ना? I need just a good source of milk. Okay. है ना? Also the farmers, okay, which is in Hyderabad, which doesn't have much idea about कि cheese कैसे बनेगा. मतलब इसके पहले बनता था. आप मिल्क से आप पनीर बना रहे हो, आप दही बना रहे हो, आप घी बना रहे हो, मक्खन बना रहे हो. बट चीज इज वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट. आई हैव एक्सप्लेन देम कि दिस इज माय प्रोसेस. सिंपल थिंग आई टेल यू. In order to make cheese, when the milking happens, I have to start the cheese process within 2 hours of milking. Okay. If milking is happening at 6 o'clock, I have to start my cheese process from 8 a.m. Okay, so the difference not more than 2 hours. So this I have to explain to the local dairy farmers. So you had the challenge that you need the milk like within 2 hours of the 2 milking. hours. Okay. I Okay, mean, that's a big challenge. that's a big challenge. And getting in small quantity is fine, but getting a big quantity is challenge. Then I explained that what I am doing it. Okay, this is the first kind of concept, and okay, we are trying to build it. The cheese will be there. I'll be making the fresh cheese. So they have understood and then they have supported us. So okay, now it's easy. अभी तो it's running, you'll get it. बट उनको पहले पसंद समझ में नहीं आती कि चीज़ कैसे बनाओगे. उनको लगा कि घी बना रहे हो क्या, तो अब कभी भी ले लो. फिर मैंने बताया कि नहीं, मुझे उनको प्रोसेस एक्सप्लेन किया पूरा कि मैं ये चीज़ बनाऊंगा. मैं 10 लीटर्स अगर मिल्क लेता हूँ तो मुझे 1 kg ही चीज़ आएगा. इसलिए मुझे अभी मैं 50 लीटर से स्टार्ट कर रहा हूँ, बट मुझे गोइंग फॉरवर्ड 200 लीटर चाहिए होगा. आई हैव गिवन इन द फ्यूचर. ठीक है ना? मैंने ये नहीं बोला कि मैं आपसे अभी काम कर रहा हूँ, मैं आपसे अभी मिल्क लूँगा. एक और चीज़ है फार्मर्स के लिए कि उनकी जो मतलब अगर आप सपोज आपके पास 10 कैटल है, तो आप चाहेंगे कि ऐसा नहीं कि आपके पास वो आदमी रहे जो 6 महीना रहे, 6 महीना चले जाए. नहीं, आप उसको देंगे जो कंटिन्यू ले रहा है. इसलिए जो भी डेयरी फार्म वाले रहते हैं वो घर वालों को देते हैं. ठीक है ना? वो बड़े बड़े सप्लाई में सोचते हैं कि अगर मैं सपोज बड़ी सप्लाई को दे दिया, ये मेरा जो रेगुलर सप्लाई वहाँ रुक जाएगा, और बड़ा सप्लाई हो सकता है आज लेगा कल बंद कर देगा. ठीक है ना? तो फिर मैंने उनको समझाया कि देखिए, मैं जो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं बहुत कम से स्टार्ट कर रहा हूँ. मैं स्टार्टेड विद 50 लीटर्स ऑफ द मिल्क. ठीक है ना? मैंने उनको बोला कि बट आफ्टर 2 years or 1.5 years आई विल बी टेकिंग 250 लीटर्स ऑफ द मिल्क एंड आई एम टेकिंग इट. दैट्स डेली. हाँ, दैट्स डेली. आई एम टॉकिंग अबाउट डेली. ओके. ठीक है ना? तो उन्होंने समझा कि चलो ठीक है, अभी 50 लीटर से शुरू करते हैं. मैंने उनको बताया कि मैं 50 लीटर लूँगा अभी, फिर 6 महीने बाद 100 लीटर्स लूँगा. क्योंकि मुझे पता था कि मैं जब आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई प्रोडक्ट. मुझे पता था कि पहले लोगों को समझ में नहीं आएगा. आई एम श्योर कि सो मेनी पीपल विल नॉट लाइक द फ्रेश चीज़. ठीक है ना? आई हैव टू गो एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट आई ऑल्सो नो, आई वॉज कॉन्फिडेंट दैट पीपल विल लव इट वंस दे विल टेस्ट द एक्चुअल. ठीक है? तो दैट आई कैन वाउच फॉर इट. Thank you. So that I was pretty sure. So इसलिए I was confident with the when I was talking to the farmer. I mean, now how many liters do you use? 250 liters daily. Every day. Damn. मतलब एक पूरा ट्रक आता होगा. नहीं, ट्रक नहीं आता, छोटा सा ऑटो आता है. Still ट्रक के लिए तो बहुत बड़ा है. अभी छोटा सा ऑटो. 250 it's a big quantity. So I think it's sorted now. Like वो प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, अभी मिल्क का इशू नहीं है. नाउ पीपल नो कि ओके, हैदराबाद में भी लोग जानते हैं कि देयर इज वन पर्सन हु मेक्स चीज एंड आई नीड द गुड क्वालिटी ऑफ मिल्क. लाइक इफ द मिल्क इज नॉट गुड, आई कांट मेक द गुड चीज बनेगा ही नहीं. I mean, how do you check the quality? Like जो vendor लेके आता है. There are few parameters that I have set. Okay, every day. That is the regular thing, exercise we do every day. Okay. After milk comes from the dairy farm,
तो हम लोग चेक करते हैं उसमें फैट परसेंटेज कितना है. Okay, you have in-house हाँ, to इन check it. हाउस ओके इंस्ट्रूमेंट, इट्स वेरी इजी इंस्ट्रूमेंट, यू कैन गेट इट Okay. फ्रॉम एनीवेयर. तो पीएच उसमें हम ये भी चेक करते हैं कि उसका पहले फैट परसेंटेज कितना है. हाँ. वी चेक पीएच कितना है उसका, Okay. ठीक है ना, टीडीएस कितना है. ये सब चीज़ें चेक करते हैं, बेसिक चीज़. द फार्मर्स मेक श्योर द कैटल्स ओके द दे फीड वेरी गुड क्वालिटी. जो मिल्क आता है वो अच्छा होना चाहिए. Right. सो दैट दे टेक केयर सो दैट द आउटकम विल बी गुड. So how did you develop the idea of creating in-house cheese rather than, importing the cheese from Italy itself? That is all about the concept of making fresh cheese every day. Okay. Okay, if I import the cheese, I will not able to create a good product. It will be the same product will be available everywhere. अगर मैं एक ही मतलब मैं इटली से ही सब चीज़ ले रहा हूँ तो वो चीज़ आप भी ले सकते हो. What is my speciality? What I am known for? ठीक है ना. अगर मैं खुद से जब चीज़ बना रहा हूँ, that is my speciality. So that's your USP. हाँ, that is my USP. अभी जैसे एग्जांपल क्रीम चीज इज cream cheese generally sour. Right. What I make it is sweet cream cheese, and I say it very clearly. अगर आप एक्चुअल क्रीम चीज टेस्ट करोगे तो वो थोड़ा खट्टा होता है, ठीक है ना. इसीलिए हम लोग स्वीट क्रीम चीज बोलते हैं, और मैं बनाता हूँ स्वीट, थोड़ा सा उसको मीठा करता हूँ, क्योंकि मेरा जो मतलब मैं जो प्रोसेस है वो 72 आवर्स तक रखता हूँ, तो उससे थोड़ा सा मिठास होता है और थोड़ा सा पैलेटेबल होता है. दैट इज माय यूएसपी. तो अगर मैं बाहर से लूंगा तो दैट विल बी द सेम. तो लाइक इकोनॉमिक्स वर्कआउट होता है, लाइक हाँ, it works out. It works out, for sure it works out. Of course it was very difficult initially. Okay, as I mentioned, I have to explain to the farmers. Okay, and now it's work out. So like, of course it is costlier than the processed cheese, but okay, it is always better than the which is more economical, like preparing it in-house or in-house preparing it in-house. That is cheaper. That is cheaper. That is cheaper. Conditionally, you have the local farmers should support you. Without local farmers, you will not able to make good cheese. One more quick question. The difference between burrata, mozzarella, and a lot of things, like, these are come under one family. Right. So how do you differentiate them? See, burrata, mozzarella, bocconcini comes under the same family. Right. It depends upon the size. If you make the smaller size, it becomes bocconcini. Bocconcini. Okay. If it is little larger, 100 gram size, it is mozzarella. Right. Okay. If you are filling inside it, okay, it is burrata. Okay. What's the filling? Stracciatella. What's that? It is a mixture of mozzarella and cream cheese. Okay. So you take it separately, you mix it with cream cheese, and we make a knot. That's it. So how important is the role of milk while preparing cheese, considering there are so many variety of milks? Milk plays very important role. The first important factor that determines what kind of cheese you are making it is milk. In India, if you talk about in India, we have cow milk, which is easily available. We have buffalo milk. Okay. Apart from that, if you go to Rajasthan, we have camel milk. We have sheep milk. We have goat milk. But cow milk and buffalo milk, these two milks are easily available. Yeah, widely available. And each has its own flavor. Mozzarella, the mozzarella that I make it is from the cow milk. Generally, people say it's buffalo mozzarella, but we say it's a cow mozzarella because we make it from the cow milk. Right. The reason I make it from the cow milk because it has less chewiness. Okay. Yeah, buffalo milk has more fat, so it is more chewy. Cow milk has its own flavor. Okay, so when you have the mozzarella, fresh mozzarella at PS Cheese, you will have little tangy flavor which comes from the cow milk. Okay, and it is easily chewable. Okay, you eat it, it is started melting in your mouth. When you heat it, and the same thing when you make pizza, when you have it, it is like easily eatable. You do not have to chew more. Whereas for the buffalo milk, fat percentage is high. Yeah. Okay. It's very chewy. It's very chewy. With with the cow milk, the recipe is very different. With buffalo milk, as buffalo milk is more thinner. Okay, so the recipe is different. Again, like feta cheese. Feta cheese, it's more crumbly. So people use the goat milk or the sheep milk. Again, with the camel milk, the cheese that you'll get is very different. Right. So that plays a very important role, significant role. I wanted to ask a general question. What do you think about the scenario of Hyderabad when it comes to food scenario, where we see so many cafes coming up, so many restaurants, like within past 1-2 years? What's your thought on that? My thought is
if you're opening anything, okay, Hmm. if you're opening like, do not open just by seeing the other cafes are doing very good, or I'll open a cafe because it's a culture. I mean, that's what is happening. Like they see one which is running, वैसे 10 निकल आते हैं, 10-20 निकल आते हैं. So there's a difference. Okay, Hmm. if you have, like, if you're opening anything and if you have knowledge about it, Hmm. if your product has potential, okay, if your product is value for money, Hmm. okay, and if you are targeting the family audience, okay, middle class, Hmm. then you will survive for sure. Okay. But if you are just opening a cafe, you do not have Hmm. any, okay, potential product, you do Hmm. not have value for money, okay, you do not know about it, what is happening, then Right. after 2 3 years, of course, you will find okay, very difficult to manage it. Right. So, firstly, I want to thank you for getting this Pleasure. amazing cheese platter. Uh-huh. So, क्या क्या है यहाँ पे? Like, what exactly is a cheese board and क्या होता है And normally? so this is called fresh cheese board. Okay. Okay, as name is clear, fresh cheese. Hmm. And in this we have four kind of the cheese that we make it in house. Okay. All the cheese are in house. The first one is in the box. This one. This one is sweet cream cheese. Okay. Okay, the rectangle one which is cut, this one. This one. Okay. That one is feta. Okay. Okay, that is flavored feta. What is flavored with? It is flavored with, okay, Indian flavor, just okay, oil and this red chili. Oh, that's it. That's it. Okay. Okay, and the other one is mozzarella. Oh, this one, the fresh mozzarella. Yeah, the fresh stretch mozzarella, the one. stretch mozzarella. Uh, Okay, and the last one is ricotta. This one. Yeah, Okay. ricotta. Okay, and other things are complementary, like we have crackers, we have some dips like cherry tomato garlic, we Hmm. have pesto sauce. Oh. Okay, and All in house. all in house, everything in house. Okay. Some fruits, okay, to complement with that. So, So you will taste and let me know how it is. so what's the best combination? You can have the ricotta with crackers. Okay. That. Yes, Anything else? and then you can have with the mozzarella with the pesto sauce. Uh, So this is the one which is a byproduct of the. Yes, this is the byproduct. So is it flavored or it's? It has, okay, I have added flavors. Some Okay. herbs, I have added rosemary, thymes. It's nothing like paneer. That's for sure. Right. It's very different. Yeah, I mean, honestly, for some reason, I really like this. Thank you. Want to try? I mean, you nailed it. I guess the cheese and the sweet tone is really adding up. I mean, normally cheeses are tangy. Right. So I made the cheese, then I added flavor according to the local palate. Local palate. That is very important. What is your target audience? So how it's being sold locally? I mean, in the cafe. Yes, The yes, ricotta. yes. Ricotta, with ricotta we do not sell it as per now, okay, because the ratio for the milk and the cheese, from 10 liters of milk I get 1 kg of the cheese, Right. but from 10 liters of the whey I get 100 gram of ricotta. Wow. Really? Huh. So small. So small. So if I have 100 liters of whey, I get 1 kg of ricotta. So we have a cheese platter. Right. So in that we serve ricotta. Okay. So this is 100 grams. And that is not 100 gram. That is will be around, okay, 40-50 grams. 40-50 grams. So roughly 5 liters में से 50 ग्राम निकला. Wow, that's crazy. That makes it very identical, very unique. True. See, it's a byproduct, ना. Hmm. तो byproduct में अच्छा आता है, byproduct में तो बहुत कम आएगा. Simple है. True. And it is not that you take paneer and you add cream and blend कर No. दो. That is totally different. Huh. This is totally different. Right. I mean, person who tries will definitely understand these are completely different cheeses. Huh. And I mean, for some reason, I really prefer this one. Thank you. And the pesto is in-house? In-house. Pesto is in-house. And how do you make it?
Again, the pesto we use the cashew and everything. The cream that I use is in-house cream cheese. We blend it and everything, pesto sauce, some cashew. Okay, so this has cream cheese also. So when you have this, just have mozzarella and with pesto. I mean, it's not your regular pesto. No, it's not regular pesto. Interesting. I mean, why did you add cream cheese in the pesto? To have the different flavor, unique flavor. Wow. I like the tanginess of it. The tanginess comes because of the cream cheese. Cream cheese. I mean, you should bottle it. Yeah. You should bottle it and sell it. We'll do that. Going really well with mozzarella. Mozzarella. It goes the mozzarella with cherry tomato and pesto. You have it. That's a classic, I guess. Yes, classic combination. And fruits, any fruit combination? Fruits with sweet cream cheese. You can have it. Direct. Direct. My dinner is done. That's it. Later I'll sit and I'll eat. But after 2 hours, you will again feel Hungry. It is easily digestible. Very easily digestible. Probably I'll take it to home and I'll make everyone taste. It looks very heavy, but when you have it, it's like... I can easily finish this off. Probably not at a stretch, but at least within a couple of hours. For sure. I heard you are a member of the group from the Artisanal Cheese Society. Right. I mean, can you share something about that? So we are making Artisanal Cheese Society in India. Okay. We didn't have a government body who regulates what cheese, what all cheese comes under cheese or what doesn't comes under cheese. Okay. Like every country has their a body which says that this comes under cheese and this is the process and this is the standard process. We have to follow it. Right. Of course, here we have the food license guidelines. We have to follow it. Cheese authority body. Okay. So which we are making it. And again, we are working on it to make sure we'll have more awareness. I'll give you an example that when we have started Roastery Coffee House 7 years before, we were not sure that we will export coffee one day. When we have opened Roastery in Finland, and we have seen huge potential of the Indian coffee. Okay, people are really liking our Indian coffee a lot. So the same thing, I guess it will be for the cheese in future. So you see India exporting cheese soon. So cheese भी एक part of culture हो जाएगा. It will be. Cheese is the future thing. Okay. For sure, cheese is not people still will take time to understand the cheese, but it's the future. So हर घर में जैसे मोज़रेला इटली में बनता है. हर एक घर में. How we are making paneer at home. हर एक घर में. That my aim, you can consider it. Okay. That I want at each home there should be how people are making paneer. People can make cheese also. I mean, as we have internet and a lot of cheese information is coming up, a lot of people are more interested to learn about it and know more about it. Yes. So eventually they'll start making it at home and do a lot of experiments. Right. Experiment is the interesting part of the cheese making. Yes. So because there are many still cheese that are unknown. Yes. Okay, example, when you make mozzarella, little different process, it become halloumi. Just little different process. Okay. So again, maybe if different process, it will become different cheese. Lot of permutation combinations. Lots of permutation combinations are there. Based upon that, we can make the cheese. That's what makes cheese really interesting subject. Very interesting subject. Because there is no end to it. There is no end. Okay. Every day, still I read every day about the cheese, and I find something new every day. So, still I give 1 hour. I read about the cheese. I read about the rennet. I read about the culture. I read about the milk. So any recent interesting fact you learned? There are a few important interesting points and important also like milk, rennet and water. अभी जैसे मिल्क का मैं बताता हूँ, कैमल मिल्क है. कैमल मिल्क से अभी कोई भी चीज़ बनाओगे आप तो थोड़ा सा बहुत टैंगी पिकुलर स्मेल होता है. Right. अगर कैमल मिल्क में मैं काउ मिल्क ऐड कर लेता हूँ तो उसका जो फ्लेवर है वो अच्छा हो जाता है. I mean कोई रेशियो है उसका? 80-20 जनरली. I mean what is 80? 80 कैमल मिल्क, 20 काउ मिल्क. Okay. फिर रेनेट
अब जैसे रेनेट है, डिपेंड्स अपॉन व्हाट क्वांटिटी वी आर यूजिंग इट, व्हाट मिल्क वी आर यूजिंग इट। ओके। तो अगर आप बफेलो मिल्क में ज़्यादा रेनेट डालते हैं तो वो जल्दी नहीं होगा। जनरली लोग समझते हैं कि काउ मिल्क पतला होता है, बफेलो मिल्क मोटा होता है, और रेनेट उसके हिसाब से, मतलब काउ मिल्क में कम डाले तो बफेलो मिल्क में ज़्यादा डालना चाहिए। ऐसा नहीं है, डिपेंड्स अपॉन बफेलो मिल्क का पीएच, मतलब टीडीएस कितना है, पीएच Okay. कितना है, और वो सब कितना है, Right. तो वो इम्पोर्टेंट है। अनदर वन इज वाटर। Okay. एग्जाम्पल, आप जो भी चीज़ बनाते हैं उसका जो यूटेंसिल्स हैं, अगर आप उसको हार्ड वाटर से क्लीन कर रहे हो ना, तो चीज़ कभी ना कभी डैमेज हो सकता है, मतलब इट वोंट कम आउट गुड समटाइम्स। Okay. क्लीनिंग यूटेंसिल्स वाटर ऑल्सो, इट हैज़ टू बी गुड पीएच। हाँ, क्लीनिंग के लिए भी लाइक हाँ, shouldn't use क्यों? क्योंकि रेनेट बहुत कम डालते हो आप, जब बहुत कम पे कोगुलेशन फॉर्म होता है, एंड इफ हार्ड वाटर रहेगा, एंड वाटर अगर यूटेंसिल्स में लगा हुआ है एंड मिल्क आप डाल रहे हो, तो इट मे डैमेज द चीज़। तो जब भी आप यूटेंसिल्स क्लीन कर रहे हो, इट शुड बी विथ सॉफ्ट वाटर, मतलब 30 से तो नीचे नहीं जाना चाहिए, 30 to 70 80 के बीच में रहना चाहिए। TDS. हाँ, टीडीएस। Okay. ठीक है, टीडीएस इज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो फिर हार्ड वाटर से आप करोगे तो फिर चीज़ खराब हो जाएगा, सेल्फ लाइफ कम हो जाएगा। आप जैसे मोज़रेला बना रहे हो, आप उसको हार्ड वाटर से किए, हार्ड वाटर का जो टीडीएस होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो आप सॉफ्ट वाटर से कर रहे हो जिसका टीडीएस 30 से 80 के बीच में है, मोज़रेला आप तो उसका सेल्फ लाइफ डेफिनेटली ज़्यादा रहेगा। Right. इवन आप जब उसको आप लैब में टेस्टिंग के लिए भी भेजोगे, तो उसमें जो फैट परसेंटेज होता है वो भी डिपेंड करता है, प्रोटीन परसेंटेज वो भी डिपेंड करता है आप कौन सा वाटर से यूज़ कर रहे हैं। सेल्फ लाइफ तो डायरेक्टली इफेक्ट करता है। हाँ, डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। दैट्स इंटरेस्टिंग। आई मीन जिस बर्तन को धो रहे हैं वो भी देख के वो भी धोना बहुत पड़ता अच्छे से होना चाहिए, है। कौन सा पानी यूज़ कर रहे हैं, कौन सा साबुन यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ। It's a tedious process. हाँ, cheese making is chemistry. Right. We have so many exceptions. Chemistry means exception. Chemistry means exception. So cheese making, मतलब you have to understand the milk chemistry. You have to understand the molecule chemistry. How does the structure works? How does protein combines? फिर कैसे करते हैं? फिर how does the bacteria works? How does the color changes? What time we have to feed the bacteria? So it's all about the chemistry. So जिसको केमिस्ट्री पसंद है ऑब्वियसली चीज जिसको केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री समझा, जो एक्सेप्शन समझा, ठीक है, हर चीज में एक्सेप्शन होता है। अभी कैमल मिल्क से टैंगी आ रहा है, आप उसमें कैमल मिल्क, जनरली आप काउ मिल्क और बफेलो मिल्क को मिक्स नहीं करते हो, बट आप कैमल मिल्क और बफेलो मिल्क को, कैमल मिल्क एंड काउ मिल्क को मिक्स कर रहे हो, फिर उसका अलग ही रेशियो हो जाता है। राइट। तो इट्स ऑल अबाउट द केमिस्ट्री। सो मेनी थिंग्स आज डिस्कस किए, especially the paneer one was really interesting. Thank you. It's not something you will find on internet. So many great insights and had a wonderful conversation. Thank you so much. Thank you so much for joining, and it was wonderful talking with you. It's my pleasure. And thank you for sharing your world of cheese with us and your amazing platter. And I wish PS Cheese Cafe to have a great run. And so any outlets coming up? Not now, but next year for sure. For sure. For sure. Okay, sure. This is September, and again this year is almost done. October, November, December. So next year, so for sure we'll come with some more outlet. Sure. Really looking forward for it. Thank you so much. Thank you for your time. Pleasure.